So we were doing neuter gender. Number 3, the third part of the genders. न्यूटर जेंडर इज बेजान जिन्स. उर्दू में हम इन्हें क्या कहते हैं? बेजान जिन्स. जो चीज़ें खुद हरकत नहीं कर सकती, जिसमें लाइफ नहीं होती, those objects are called lifeless objects and lifeless objects are called neuter gender. ठीक है? For example, we have here book, table, house, etc. As you can see from the names here, these all things are lifeless. ये सांस नहीं ले सकती, ना ही कुछ चल सकती हैं. So it is clear that book, table and house are neuter gender. Now let's come to the fourth part. We have common gender. Common gender. What is a common gender? जिसको हम कहते हैं मुश्तरक जिन्स. यानी कि इसमें दोनों जो जेंडर्स हैं वो ऐड होते हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी.